Hello students, I am Gaurika from NCERT on Go. Welcomes you all to my YouTube channel. As you all know that we are working on the series of extra questions. So class 9th, today I am going to provide you your extra questions from second poem, which is Wind, and the poet for the poem is Subramanya Bharti. Students, if you want to check out the extra questions of your previous chapter, do visit the playlist on my YouTube channel and also share it with your friends ताकि उनको भी इसका benefit हो सके. Do subscribe to the channel so that you will get the extra questions of your further chapters. So students, here I am with your very first question. Give in brief the central idea of the poem Wind. Means what message the poet wants to convey you guys with his poem. Answer is, the central idea of the poem is that nobody cares for the weak, even God help the strong. Therefore we should not pray for mercy or help. We should make ourselves strong. If we are strong, everybody will like to be friends with us. Means we should not pray for the mercy or help. We should never. We should make ourselves strong enough so that we will be able to face our difficulties. People will make you friends only if you are strong enough, because nobody cares for the weak. Nobody wants weak to be their friends. Question number 2 is, what lesson can we learn from the action of the wind on the fire? Answer is, if the fire is weak, the wind blows it out. Means कि फायर अगर थोड़ी वीक होती है तो विंड उसे कम्प्लीटली वाइप आउट कर देती है, उसे कम्प्लीटली बुझा देती है. इफ़ द फायर इज स्ट्रॉन्ग, द विंड एड्स मोर पावर टू इट. अगर फायर स्ट्रॉन्ग होती है तो विंड उसे और ज़्यादा फ्लरिश करने में, ग्रो करने में हेल्प करती है. यहाँ पे हमें इससे क्या मैसेज मिलता है? इट मीन्स कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो लोग आपके फ्रेंड्स बनते हैं. अगर आप वीक हो तो कोई भी आपकी केयर नहीं करता, लोग आपको और दबाने की कोशिश करते हैं. Therefore we should make ourselves strong. If we are weak, everybody will harm us. If we are strong, everybody will like to be friends with us. Even the God help those who are strong. They pay no attention to the prayers of the weak. I hope students आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है. So students, here is your third question. Why does the poet plead with the wind to blow softly? Means why he requested the wind to blow softly. Plead means request. Answer is, when the wind blows softly, it is harmless and enjoyable. But when it blows fiercely means violently, it wreaks havoc. Wreaks havoc is a phrase जिसका मतलब होता है to cause great damage. Therefore the poet wants the wind to be gentle and soft. यहाँ पे बेसिकली हमें विंड के 2 फेजेस दिखाए गए हैं. मीन्स पोइट क्या कहता है कि विंड अगर सॉफ्टली ब्लो करती है देन इट इज़ हार्मलेस एंड मोर ओवर इंजॉयबल. लेकिन जहाँ पे वो हार्शली ब्लो करती है, जहाँ पे तूफ़ान आ जाता है, वहीं पे वो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर देती है. दैट्स वाई ही रिक्वेस्टेड द विंड टू ब्लो सॉफ्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, explain the line you brought rain again, or how does the wind bring rain? Answer is, the line highlights the fact that the wind brings rain. As you all know, आप सभी को ये बात पता होगी कि wind really helps to bring rain. It blows the vapor laden clouds around and cause them to make rain. The movement of clouds in the sky is possible because of wind. Sometimes the rain brought by the wind also cause damage, but sometimes violent rain or the thunderstorm is also because of the wind itself. Question number 5 is, how does the wind make fun of the weaklings? Weaklings means weak people. Answer is, the strong wind uses his destructive power to harm weak persons and delicate things. Basic motive कहने का यही है कि जो वीक होता है विंड उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, लेकिन जो स्ट्रांगली उसके आगे खड़ा रहता है वो उसे और भी ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करती है. ठीक है, तो जो वीक पर्सन्स हैं उनको वो अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर से, डिस्ट्रक्टिव मतलब ख़त्म कर देने की क्षमता होती है विंड में. एज यू ऑल नो दैट विंड कैन मेक डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन.
Without showing any mercy or sympathy, he crushes weak houses, crumbling doors, and even human lives and hearts. विंड के लिए आपकी पोएम में ही यूज़ किया गया था, दैट्स वाई मैंने ही यूज़ किया है. अदरवाइज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही और शी यूज़ नहीं करते, वी ऑलवेज यूज़ इट. बट बिकॉज इन द पोएम ही हैज़ बीन यूज्ड फॉर द विंड, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड. By moving violently and destroying the weak, he seems to make fun of their helplessness. It means कि उसके मन में कोई सिंपथी नहीं है जो वीक है उन लोगों के लिए. जो वीक है वो उनको अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर से और ज़्यादा दबा देती है, उनको वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है. इस वे से वो उनकी हेल्पलेसनेस का मजाक उड़ाती है. Question number 6 is, what should people do to avoid the destruction caused by the strong winds, or why should people build strong houses and strong doors? बेसिक एम इसके पीछे यही है कि हम चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखते हैं ताकि विंड अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज़ करके हमें कोई भी हार्म ना पहुंचा सके. Answer: to avoid the destruction caused by the strong wind, it is essential that people should construct solid houses with firm, strong doors. Firm means hard. The buildings should be able to resist the attack of violent wind. Next question is, students, why does the poet remarks that the friendship of wind is good? Why he said so? Answer is, the poet remarks that the friendship of wind is good because the wind has both kind and wicked aspects. Wicked means evil, बुरा. Wind के दो aspects हैं. I have explained both of them to you earlier. If we are weak, its destructive forces causes havoc. Havoc means great damage. But if we are strong, we may harness its power and use it for constructive purposes. If we are weak, it will wipe us completely. But if we are strong enough, if we have the ability to stand still in front of destructive power of the wind, then it will help us to grow. And we can harness its power, means we can use it in a positive way for some productive or constructive purposes. As a friend, the wind works for the benefit of mankind. आप सबको पता है कि wind हमारे लिए beneficial भी होती है. As I told you earlier that wind helps the clouds to bring rain. सबसे major factor है कि वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. And the biggest and the foremost is air is required for survival. And इसके अलावा भी बहुत सारे uses हैं उसके. Your 8th question is, briefly describe the central idea of the poem. मैंने basically central idea से related 2 questions रखे हैं. If in the exam this question comes, तो आप दोनों mix करके लिख सकते हैं इसका आंसर. The poem Wind motivates us to face challenges of life with grit and determination. Grit means courage. It motivates us, it inspires us that we should face the challenges of life with strong determination, with courage. It inspires us to face all the hardships of life with courage. Hardships means difficulties. Representing the turmoil and troubles of life, the strong wind teaches us the value of unshakable determination. Means basically वो में inspire करती है wind की चाहे लाइफ में कितने भी हार्डशिप्स आ जाएं, वी शुड नेवर लूज आवर कॉन्फिडेंस. इंस्टेड वी शुड स्टैंड स्टिल एंड फेस दोज डिफिकल्टीज विद करेज एंड डिटर्मिनेशन. क्वेश्चन नंबर 9th इज, व्हाट कैन विंड डू इफ इट बिकम्स आवर फ्रेंड? इन केस विंड हमारी फ्रेंड है, बन जाती है, तो वो हमें कैसे हेल्प करेगी? विंड कैन टीच अस पॉजिटिव क्वालिटीज जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स डू. Its strength can teach us to be tough and determined in difficult times, and its force can teach us to face obstacles bravely. I hope students आपको clear हो गया होगा. So students, here is your next question. What should we do to become friend with the wind? Answer is, the poet suggests that we should build strong houses and fix the doors firmly to become friends with the wind. Poet suggest करते हैं कि हमें अपने घर और ज़्यादा strongly बनाने चाहिए so that wind would not be able to destroy our houses with its power. Moreover, we should make ourselves mentally and physically strong enough to face the difficulties caused by wind as shown in the poem. He also suggested that we should make ourselves
more stronger physically as well as mentally, so that wind जो भी हमारे लिए difficulties लेकर आती है, here wind is compared with life, means life जो भी आपके लिए difficulties लेकर आती है, आपको खुद को इतना strong बनाना है कि वो difficulties आप easily face कर सको. You should have that courage and strong determination. So students, next question is, how does the poet describes the wind in the poem Wind? Answer is, in the poem, the poet describes the destructive as well as constructive forms of the wind. It means the poet has both showed the positive as well as the negative aspects of the wind. The wind destroys and crushes the weak and makes the strong more stronger. Question number 12 is, how does the wind behave with stronger fires? Answer is, it behaves like a friend with the stronger ones. It cannot destroy them, so it accepts their might and stops troubling them. Rather, it increases their strength by contributing its own. Means जो लोग strong हैं, wind उन्हें trouble नहीं कर सकती. That's why वो सामने वाले strong लोगों की strength को accept करती है. Moreover, wind contributes its own energy to make them more stronger. Next question is, whom does the poet praise and why? Answer is, the poet praises the wind. He has accepted the power of wind, which stands for hardships in our life. If we want to be successful in life, we must have a strong body and heart. Only strong people can face challenges in life. यहाँ पे जो पोइट है वो विंड के जो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है उसकी प्रेज करता है और कहता है that we should inspire ourselves from the strong aspect of wind. We should behave strongly if we will face any kind of hardships and obstacles in our life. Next question is, what does the wind do with the books? The wind tears the pages off and throws them down from the bookshelf. The potent means powerful wind scatters the books and sheets of paper on the floor. It disturbs everything. अब हमने wind का behavior previous questions में fire के साथ देखा. Now the question is कि wind का behavior books के साथ कैसा है? Because books are weak, so वो क्या wind क्या करती है? उसके pages tear off कर देती है, books को गिरा देती है shelf से. Likewise जो weak प्लांट्स होते हैं विंड उन्हें वाइप आउट कर देती है, बट जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं जो खड़े रहते हैं विंड के फोर्स के सामने वो उनको हिला नहीं पाती बिकॉज वो उनकी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कर लेती है. सो स्टूडेंट्स, योर लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई एंड हाउ डज द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स हु रोर्स एंड फ्लरिश? मीन्स कि कैसे विंड जो है वो वीक फायर्स को ब्लो आउट कर जाती है और कौन सर्वाइव करता है या फ्लरिश करता है? आंसर इज, द गॉड ऑफ विंड इज अगेंस्ट एनी एंड एवरी शेकी एंड वीक थिंग. मीन्स जो विंड है वो वीक थिंग्स के अगेंस्ट है. जो थिंग्स वीक हैं, जो उसके फोर्स के आगे नहीं खड़ी हो पाती, वो उनको ब्लो आउट कर देती है. बट द थिंग्स विच आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड, द विंड एक्सेप्ट्स इट्स पावर and moreover it contributes its energy even to help them grow. Our heart should be fired with determination and strength. Weak fires and weaklings are flown out. वही जो मैंने बताया आपको कि जो weak fires हैं वो बह जाती हैं. Only the strong roar and flourish. तो जो strong है वही survive करता है, वही flourish करता है. His friendship is well rewarding. रिवार्डिंग मीन्स फ्रूटफुल है. बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें विंड के साथ फ्रेंडशिप करके. लेट अस प्रेज द विंड, द सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ. दैट्स वाई विंड नीड्स टू बी प्रेज्ड, दैट हाउ it symbolizes the strength and power.